Okay, so welcome to Chandigarh Defense Academy and अभी जो lecture चल रहा है बच्चों वो है physics का and we will be preparing you for the NDA. So this is Chandigarh Defense Academy representing physics for NDA, and today we are going to discuss about this chapter, that is thermal properties and kinetic theory of gases. Now we will be doing questions taken from all the previous year examinations, and we have segregated it topic wise and chapter wise. तो आओ शुरू करते हैं and let us talk about physics for NDA, and the topic is thermal properties and kinetic theory of gases. तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, as you can see in question number 1, he is stating that temperature for which the reading on Celsius and Fahrenheit scale is identical. कौन से टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का रीडिंग इज आइडेंटिकल. आई होप यू रिमेंबर दैट फॉर्मूला कि जो F होता है, F इज टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट. F इज इक्वल टू 32 प्लस 9/5 इंटू C. तो अगर इनको आप बराबर करते हो, एक वैल्यू डाल के देखते हैं. आ जाओ, 32 प्लस 9/5 और C की वैल्यू डालो -40 डिग्री सेल्सियस. तो 5 40 कैंसिल करेगा, ये होगा 8 8 9 72. दिस इज 32 minus 72 and answer is -40 Fahrenheit. So at which reading Fahrenheit is equal to degree Celsius? -40. This is the answer. What is the temperature? -40. चलो आगे चले. I hope it is clear. चलिए next आइए. The equivalence of two systems in thermal equilibrium is represented by the property of. When are the two systems in thermal equilibrium? Temperature. अगर temperature बराबर है then they are in thermal equilibrium. That is a law of thermodynamics. तो उसके basis पे the answer to this question is choice B. If the temperature of two systems are identical, then they are in thermal equilibrium. Okay, चलिए. I hope it is clear. चलो जी, next question number 3. Specific heat capacity of a substance depends on. Here we are talking about small s. If you remember from physics, small s. और किसी को फॉर्मूला याद हो, हम बोलते थे Q is equal to ms delta theta. Delta theta is the change in temperature. So S is the specific heat capacity. It is the property of the substance. Water के लिए अलग है, gas कोई भी है उसके लिए S अलग है. Based on this, the answer would be nature of the substance. और यूनिट्स क्या होते हैं? जूल्स, मास नीचे आ जाएगा केजी, वो आ जाएगा नीचे पर डिग्री सेल्सियस. जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस. दीज आर द यूनिट्स ऑफ द स्मॉल एस. गॉट दिस? चलो, ग्रेट. सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question is, when water is heated from 0 degree Celsius to 20 degree Celsius, how does its volume change? ये we have discussed last time also, that density of the water is maximum at 4 degrees Celsius. If density of water is maximum at 4 degrees Celsius, volume चलता है उल्टा, है ना? Density क्या होता है? Mass upon volume. So if density is mass upon volume, based on that, if density is maximum at 4 degrees Celsius, volume will be minimum at 4 degrees Celsius. The plot will be somewhat like this. Because at 4 degrees Celsius, volume will be minimum. So based on this, how should its volume change? It first decreases, then increases. It first decreases, then increases. So based on this, answer will be choice D. It shall first decrease and then increase. I hope it is clear. Just remember the one rule. Density of water is maximum at 4 degrees Celsius. Therefore, volume will be minimum at 4 degrees Celsius. Okay? Great. चलो जी, next आइए. Let's go to the next question. Real expansion of the liquid is always. What is this real expansion and apparent expansion? I will just take a minute to explain this. Imagine you take one beaker
and you put one liquid in it and you start to heat it. इसको हीट करते हैं, लिक्विड एक्सपैंड करेगा, है ना? बट व्हाट अबाउट दिस vessel that you have taken? Vessel will also expand. लिक्विड भी एक्सपेंड करेगा, वेसल भी एक्सपेंड करेगा. ड्यू टू दैट लिक्विड उतना राइज नहीं कर पाएगा. थिंक लाइक दैट. यूटेंसिल हो गया बड़ा तो लिक्विड नीचे आ जाएगा. अगर यूटेंसिल ना एक्सपेंड करता, if there was no expansion in the utensil or vessel, then liquid will rise further, and that is the real expansion. So that means real expansion is always greater than what? Apparent expansion. That means real expansion is always greater than what? Apparent expansion. Clear? I hope you understand this. याद रखिएगा, इन चीजों को पूछते रहते हैं इंडिया एग्जाम में. आओ जी, नेक्स्ट. Paraffin wax, this is some information he is giving. Paraffin wax contracts on the solidification. The melting point of wax will. See, अगर उसका solidification हो रहा है, contraction हो रहा है, please understand this. बात बड़ी सीधी सी है. वो कह रहा है अगर प्रेशर इंक्रीज होता है, क्या इंक्रीज होता है? प्रेशर. इफ प्रेशर इंक्रीजेस, इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग. उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, उसका वॉल्यूम कम हो रहा है. that means melting point उसका डिक्रीज होगा. जस्ट लाइक द आइस पे प्रेशर डालो, its melting point decreases. Therefore the answer is it decreases with the pressure. It decreases with the pressure. अगर ice की बात करोगे, just remember, because ice is identical to paraffin wax. Ice is identical to what? Paraffin wax. So if the pressure increases, its melting point decreases. तभी ice melt हो जाती है प्रेशर बढ़ाने पे. याद रखिएगा इसको. It's an important concept. चलिए जी, नेक्स्ट आइए. When the pressure on the, ये देखो कोई क्वेश्चन आ गया. When the pressure on the piece of ice increases, its melting point decreases. Remember this. When pressure on the piece of ice increases, its melting point decreases. It's a very important concept. एक बार एनडीए में और भी क्वेश्चन आया था कि वो आइस स्कीइंग होती है ना, वो कैसे कर सकते हैं हम? आइस के ऊपर स्केटिंग करते हैं ना. हाउ कैन वी डू दैट? सी, व्हेन यू पुट द स्केट्स ऑन द आइस, यू आर पुटिंग द प्रेशर ऑन द आइस. ड्यू टू दैट आइस मेल्ट्स एंड इट क्रिएट्स अ लेयर जिस पे आप फिर स्कीइंग कर सकते हो. जिस पे आप क्या कर सकते हो? स्कीइंग कर सकते हो. Clear? Remember this concept. Let's proceed to the next one. Unit of universal gas constant, that is your capital R. Units are joules per mole per Kelvin. So based on this, the answer would be choice C. This is that universal gas constant जिसकी हम बात करते हैं. PV is equal to nRT in the gas equation. PV is equal to nRT. Okay, please remember this. So बेटा ये सारे previous years के questions हैं जो NDA में आए हुए हैं. मैं फिर बता दूं. और ये हमने CDA ने, चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी ने चैप्टर वाइज सेग्रीगेट किए हैं and we are providing it to you. चलो जी, next question. Question number 9. Molecules of gas behaves like inelastic rigid sphere, perfectly elastic non-rigid sphere, perfectly elastic rigid sphere. Choice D is inelastic non-rigid sphere. और kinetic theory के आपको वो 7 assumptions याद हैं? 5 plus 2, 7. We used to say collisions are elastic, and molecules are rigid. So based on that, answer will be perfectly elastic rigid sphere. Answer is choice C. Perfectly elastic rigid sphere. Clear? So let's move to the next one.
Which of the following statements about kinetic energy of gases is wrong? ध्यान से वो पूछ रहा है कौन सी assumptions wrong हैं. The molecules of gas are in continuous and random motion. It is absolutely fine, true है, बिल्कुल सही है. Next आइए. The molecules continuously undergo inelastic collision. ये तो गलत हो गया. अभी तो बोला. अभी we just mentioned that the collisions in the gaseous molecules is elastic. That is what we are assuming. So statement is wrong, but answer is right. बाकी सब सही है. The molecules do not interact with each other during the collisions. The collisions amongst the molecules are of short duration. They are all okay. I hope you remember वो आपकी 7 assumptions of kinetic theory of gases. ठीक है? चलो. So based on this is the question that we have answered. चलो next पे आइए. Question number 11th. मैंने कल भी बोला था जब हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, ये जो चैप्टर है kinetic theory of gases, you will find it very much relevant to the chemistry also. So but it is part of physics, तो पूछे जाते हैं questions. N is equal to PV by RT. शायद इक्वेशन आपको दिख नहीं रही होगी यहाँ पे. N is equal to PV by RT. This is the universal gas equation, ideal gas equation. What is N? Number of moles. Quite easy. What is small n? Number of moles. Okay. Next is question number 12th. Mean free path of the gas molecule. Oh, it's not visible. Let me show it to you. Mean free path of gas molecules is, what is mean free path? It is a distance traveled between two successive collisions. जब दो मॉलिक्यूल आपस में जाते हैं ना, तो कोलाइड किए, फिर वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेगा, तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, that is the mean free path. Now based on that you have to choose the right option. It is inversely proportional to the number of molecules per unit volume. It is perfectly fine. Choice A is the answer. थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं from class 11th. उसमें एक फॉर्मूला डिराइव होता था किनेटिक थ्योरी में, लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई n d स्क्वायर. आया कुछ याद? d square is the diameter of the molecule, n is the number of molecules per unit volume. So mean free path lambda is inversely proportional to the number of molecules per unit volume. Mean free path is inversely proportional to number of molecules per unit volume. Clear? Let's go to the next question. RMS speed of the gas molecule is given by, I'm just going to write one formula here. RMS velocity from class 11th, if you remember, is √3 RT by capital M, that is the molecular mass. √3 हो जाएगा 1.732. ये आई थिंक वाइट नहीं है, ब्लैक में नहीं दिख रहा होगा आपको. इट इज गिवन एज √RT by M. आंसर इज चॉइस बी. ओके, व्हाट इज द आंसर? RMS speed of the gas molecule is given by √3 RT by M. चले आगे. देखो रिवीजन हो रहा है, रिवीजन तो हो ही रहा है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, बट हमें एनडीए को भी ध्यान में रखना है. रेलेवेंट रिवीजन करना है, रेलेवेंट. चलो आ जाओ. A diatomic molecule has how many degree of freedom? Degree of freedom अगर आपको याद होगा, मोनोटॉमिक की होती थी 3. डायटोमिक अगर हाई टेम्परेचर नहीं है तो जब तक मेंशन ना हो हाई टेम्परेचर, हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम है डायटोमिक का 5. कितना? 5. Monatomic is 3, diatomic is 5. As long as temperature is not too high or it is mentioned, consider it. और अगर कंसिडर कर लें फिर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और बढ़ जाती है. बट यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? 5. इट्स अ सिंपल क्वेश्चन. डायटोमिक मॉलिक्यूल हैज डिग्री ऑफ फ्रीडम 5. मोनोटोमिक याद रखिएगा 3, बिकॉज दे कैन आस्क यू. चलो, दिस इज डन. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. For an ideal gas of diatomic molecule, CP/CV का रिश्ता पूछ रहे हो, और मैं डिराइव कर देता हूँ क्विकली. You remember CV from your class 11th? It was F/2R. R is universal gas constant. What is CV?
मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये याद होगा जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक के लिए हो गया 5, तो CV हो गया F5/2R। CV इज इक्वल टू 5/2R, 5/2R कहीं नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं बनता यहाँ पे। देन गो फॉर द मेयर्स फॉर्मूला, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। CP माइनस CV क्या हो गया? R। From here I can find the value of CP. CP will be equal to CV plus R. Put down the value of CV. This will be 5/2R plus R. Answer is CP is 7/2R. ये भी दिख नहीं रहा होगा, आंसर is choice D. CP is 7/2R. Remember two important results. CV is F/2R and CP minus CV is R. ओके, सो हम आगे बढ़ते जाएंगे, फिजिक्स को समझते जाएंगे एनडीए के लिए। ये जो क्लास स्ट्रीम हो रही है दैट इज फॉर फिजिक्स फॉर एनडीए। आ जाओ। इफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आइडियल गैसेस आर हाफ्ड, देन इट्स टेम्परेचर। अप्लाई दैट इक्वेशन। आंसर तो मैं बाद में निकालूंगा। Apply that equation. P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. आ जाओ। P1 V1 by T1. These are the initial conditions. Then he is going on to say pressure and volume of certain quantity of ideal gases are halved. Pressure and volume half कर दिया P1 by 2. Volume भी half कर दिया। T2 निकालना है, तो T2 कितना हो गया? 4 times of sorry कितना हो गया? एक सेकेंड, just a second. So this implies T2 हो गया T1 by 4. ठीक है? So what is the answer? It becomes 1/4. It becomes 1/4. Just apply the gas equation. P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. P2 is half लिखा हुआ है, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आइडियल गैसेस आर हाफ, वॉल्यूम इज आल्सो हाफ। T2 निकालना है, इनिशियल टेम्परेचर का हो गया 1/4। याद रखिएगा, क्वेश्चंस आते रहते हैं ऐसे कैडेट्स। चलिए, one of the very popular questions, 1 gram of ice is mixed, ice at 0 degrees Celsius is mixed with 1 gram of steam at 100 degrees Celsius. After thermal equilibrium, the temperature of the mixture is. ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत जगह इसका आंसर गलत भी दिया हुआ है। एक तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे मिस प्रिंट है, आंसर इसका रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वो 10 मिस प्रिंट हुआ, रियली सॉरी फॉर दैट। आंसर इज व्हाट? 100 डिग्री सेल्सियस। See the logic behind this कि हीट कितना है और कितना एब्जॉर्ब हुआ। हीट कितना है? 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। हीट अवेलेबल, मैं सिर्फ Q लिख देता हूं, उसको Q अवेलेबल लिख देता हूं। सो हीट इज अवेलेबल विद द स्टीम। व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम? 540 कैलोरीज पर ग्राम। कितना बोला मैंने? 540 कैलोरीज पर ग्राम। So that will be 1 gram into 540 calories per gram. Answer is what? 540 calories. And I will be doing in calories because sometimes it's convenient to do in calories. अब आ जाओ ice पे। Ice is going to melt. तो heat, you can say ice जो absorb करेगी तो ice की heat होती है 80 calories per gram. Latent heat. तो ये तो 80 हो गया। अब वाटर हीट करेगा, QH बोल देते हैं उसको। आइस पिघल गई, आइस मेल्ट हो गया। आइस क्या करेगा? हीट, पानी जो मेल्ट होके बना वो क्या करेगा? हीट करेगा। कहां तक जा सकता है? मैक्सिमम 100 तक। कितने ग्राम आइस है? 1 ग्राम। सो दिस विल बी मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1 and temperature difference will be 100 minus 0 because it is starting from 0 going to 100. What is the answer? 100 calories. 100 calories are consumed here, 80 calories are consumed here, which is still less than 540 calories which was available. Due to that, temperature will still be at which? 100 degrees Celsius.
मतलब जितना हीट था वो तो कंज्यूम हुआ नहीं, अभी भी बचा हुआ है. So that means temperature of the mixture will still be at 100 degrees Celsius. Is it clear? It should be. Important question. Important question of physics. Chalo ji. Let's proceed to the next one. Question number 18. आओ जी, अब ये क्वेश्चन आएंगे वाटर आइस वाले. मैंने लास्ट टाइम बोला था ये वाटर आइस का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. आ जाओ. 1 gram of water at 100 degrees Celsius is converted to steam at the same temperature. The amount of heat required is nearest. Joules में पूछ रहा है, ध्यान से joules में पूछ रहा है. आ जाओ निकालें. वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है. So heat needed will be ml, latent heat. What is the mass of the water available? 1. What is the latent heat of water? 540 calories per gram. Answer is 540 calories. Answer is what? 540 calories. But he is asking you the options in joules. Take one approximation. 1 calorie is approximately equal to 4.2 joules. Multiply by 4.2. Clearly answers will be in thousands. तो 2000 के आसपास आंसर जा रहा है. क्लियरली दिख रहा है, यानी कि ये मल्टीप्लाई होगा 54 और 42. 2000 के आसपास आंसर जाएगा. आंसर इज 2257 joules. कई बार सॉल्व नहीं करना. इट इज नॉट ए सब्जेक्टिव क्वेश्चन. ये भी ट्रिक्स होते हैं छोटे छोटे से. आपको आइडिया हो गया ये मल्टीप्लाई हो रहा है. सेव द टाइम. 100 में तो रह नहीं सकता. 540 मल्टीप्लाई हो रहा है 4.2. जस्ट थिंक. ओके, without any doubt take the answer. That's it. Okay, so this is the amount of heat that is needed in joules. चलिए नेक्स्ट आइए जी. Two liquids of equal volume are mixed thoroughly. Their specific heat capacities are S1 and S2. वो जो दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है θ1 θ2. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. Specific heat capacities are S1 and S2. Temperature is θ1 and θ2, and their densities are given ρ1 and ρ2. This is a question of calorimetry. If you remember the formula from class 11, it's a direct question. Resultant temperature will be, हाँ जी, किसी को याद है? ρ1 S1 θ1 plus ρ2 S2 θ2 divided by ρ1 S1 plus ρ2 S2. Now sometimes students ask me, sir ये आपको याद कैसे रह जाता है? क्या ऊपर लिखना है क्या नीचे लिखना है? देखो बड़ी सीधी सी बात है. इधर क्या है? टेम्परेचर. लेफ्ट साइड पे क्या है? टेम्परेचर. तो इधर θ1 θ2 क्या है? टेम्परेचर. वो आएगा ऊपर, वो ऊपर ही आएगा. डायमेंशंस का यूज करो बेटा. बार बार इतना लंबा सॉल्यूशन नहीं ले सकते वहां पे. वी डोंट हैव टाइम. बी स्मार्ट थिंकर. हो गया. नाउ अगर यहाँ पे ρ1 S1 है तो इसको कैंसिल करने के लिए डायमेंशंस की बात कर रहा हूं. देयर शुड बी वन ρ1 S1 एट द डिनोमिनेटर. आई कैन नॉट से डेंसिटी इज इक्वल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर हैज टू बी इक्वल टू टेम्परेचर. आपके काफी फॉर्मूलेस तो डायमेंशन पे हो जाते हैं. सो जस्ट कीप इन माइंड चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स मेजरमेंट एंड डायमेंशंस क्लास 11th. बहुत साल पहले किया था, 1 साल 2 साल पहले किया था. वहां से उठाया लॉजिक. तो बेस्ड ऑन दिस आंसर इज चॉइस है. ये थोड़ा ब्लैक में है, प्लीज डू फॉरगिव अस. विल रेक्टिफाई इट. It is written as ρ1 S1 θ1 plus ρ2 S2 θ2 divided by ρ1 S1 plus ρ2 S2. Concept is of calorimetry. So next आइए जी. Let's try to solve this numerical. This is based from the linear expansion. वो फॉर्मूला याद है आपको? मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं थोड़ा सा फॉर्मूले से. रिवाइज करा दूं. हम बोलते थे L dash new length is equal to original length and L that is into 1 plus alpha delta t. I hope you remember. Coefficient of linear expansion alpha, aerial expansion beta, then gamma, है ना? तो ये linear expansion का क्वेश्चन है.
A steel scale correctly reads at 0 degrees Celsius. That means reference temperature is 0 degrees Celsius. Coefficient of linear expansion of the steel is 12 into 10 raised to power minus 6. That means alpha value is given 12 into 10 raised to power minus 6. The correction that must be applied to a length of 25 meter measured by the scale at 30 degrees Celsius. Correction निकालना है, that means delta L निकालना है. आओ जी थोड़ा डिराइव करें डेल्टा एल का रिजल्ट इधर लेके आओ, इसको ओपन करो. एल डैश विल बी इक्वल्स टू एल, ओपन करिए ब्रैकेट, प्लस एल अल्फा डेल्टा टी. ब्रिंग दिस एल ऑन दिस साइड. दिस विल रिजल्ट इन एल डैश माइनस एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी. ये एल को इधर ले आए. दिस इज द चेंज इन लेंथ. This implies delta L is equal to L alpha delta T. This is it. I could have written directly, but I'm just revising for the other sake so that आपको थोड़ा revise हो जाए. Delta L निकालना है, put down the values. So this implies delta L will be equal to L की value डालो 25 meter. Alpha की value डालिए 12 into 10 raised to power minus 6. Delta T, that is final temperature minus initial temperature, that will be 30 minus 0. Okay, so this is a number that you are getting. You have to solve 25 into 12 into 10 raised to power minus 6 into 30. थोड़ा सा सॉल्व करके देख लो, आई थिंक आंसर आ जाएगा. मैं एक बार इसकी कैलकुलेशंस क्लियर कर देता हूँ. मैं सीधा कैलकुलेट करता हूँ. आ जाओ. डेल्टा एल आया है हमारा, L is 25, alpha is 12 into 10 raised to power minus 6 and delta T is 30. अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई करें, 3 2 12 का कितना हो गया 36. हमें तो बस फिगर देखनी है कितनी आ रही है, वो तो अपने आप हो जाएगा आंसर. आ जाओ. 3 2 12 का कितना हो गया 36. इसको मल्टीप्लाई करो. 6 5 30, 3 6 2 12, 15, 3 5 15, 1 3 2 6 7 0 5 5 10 1 7 8 9 900 आया है. डेसिमल में जब कन्वर्ट करोगे आंसर इज 0.009 बिकॉज यहाँ पे पावर था. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डोंट गो फॉर द एग्जैक्ट कैलकुलेशन स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. आंसर आपके सामने है, आंसर आपके सामने है. सेव द टाइम, गेट टू द वैल्यू जो तुम्हें लग रहा है आंसर हो सकता है. कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं है ना. ध्यान से स्मार्टली काम करना है. आई होप इट इज क्लियर. सो आंसर इज 0.009 मीटर. चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Ice, water, heat questions, they will be there. You have to answer these questions. Okay. The quantity of heat required to convert 0.5 kg of ice at 0 to water at 20 degrees Celsius, assuming latent heat of ice to be 80 calories per gram, though which is known to us. कहता जी heat निकालो. Ice is being converted into water. तो पहले तो ice water में convert होगी. तो let us say that is heat number 1. That is given by m into L. It's 0.5 kg. Be careful. And it is in calorie per gram. It needs to be converted. तो 0.5 kg हो जाएगा 500 gram and this is 80. So this gives me 8 5 8s are 40. That is 40,000 calories. That means 40 kilocalories. 8 5s are 40. That means 40,000 kilocalories. I mean 40,000 calories. That means 40 kilocalories. This is the heat number 1. Heat number 2. वो जो पानी बना पिघल के उसको हीट होना है ना. तो उसमें फॉर्मूला लगेगा. दैट फॉर्मूला दैट विल बी यूजिंग इज ms डेल्टा थीटा. व्हाट इज द मास, जितना कन्वर्ट हुआ 500 ग्राम. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. कहां तक लेके जाना है 20 तक. दैट इज 2 5 10. दैट इज 10 किलो कैलोरीज. 40 plus 10 is what? 50 kilocalories. That is the answer. Choice C. आ गया समझ में? First ice takes the heat, then water heats. First ice takes the heat to melt, and then water heats up. That adds up to 50 kilocalories.
Everybody clear? Good. Chale. Let's proceed to the next one. Okay, reason, assertion statements are there. So based on that, let's try to answer these questions. मैं एक बार जिनको नहीं पता, हाँ मैं याद आ गया मेरे को, वी आर स्ट्रीमिंग, मैं एक बार बता दूं अगर कोई बाहर से भी देख रहा है हमको. ये रीजन असर्शन जो क्वेश्चंस होते हैं, यू हैव टू फर्स्ट, देयर विल बी 2 स्टेटमेंट्स दैट विल बी गिवन टू यू. अभी आएगा क्वेश्चन. कितनी स्टेटमेंट्स दी होंगी? 2. पहले चेक करना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत. अगर दोनों सही हैं और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट को समझा रही है, देन द आंसर इज ए. सी लिखा हुआ है, if both assertion and reason, यानी कि दोनों statements are true and the reason is the correct explanation of the assertion, answer will be choice A. Choice B में दोनों statements सही हैं, but statement B statement 1 को समझा नहीं रही है, it is not explaining the statement number 1, that is assertion, then answer will be B. If first statement is true but second statement is wrong, that is reason is false, then the answer is C. And if the first statement is wrong, पहली statement ही गलत है, फिर कुछ नहीं करना, answer is D, choice D. ठीक है? Based on this logic, let's try to answer this question. The root mean square speed and the most probable speeds of the molecules in gas are the same. Assertion पहली statement ही गलत हो गई. ये तो बराबर नहीं है, मैं थोड़ा रिवाइज करा दूं. If we were talking about the RMS speeds of the gas molecules, it was given by 3 RT by m. अभी बोला था हमने, है ना? Most probable speed is given by 2 RT by m. Maxwell distribution says. तो assertion गलत हो गया, पहला statement ही गलत हो गया, आंसर बन जाएगा choice D. Be very careful. And as you can see, the second statement, he's saying Maxwell law is defining that, which is true. So assertion is wrong, reason is true. Assertion is wrong, reason is true. Good. Let's proceed to the next one. Which of the following statements are true regarding heat? Now this is not a reason assertion question. वो हो गया. Don't mix it up. Next पे आओ. Next question है. Next type of question है. ऐसे आते हैं वहाँ पे. 3 to 4 statements will be given and you will have to say which is wrong, which is right. आ जाओ जी. Heat is a form of energy. सही है. अपने आप डिसाइड करो पहले, सही है कि गलत है. सही है. Heat can be reflected by mirrors. It is true because heat is also the form of electromagnetic wave. And that is what he is saying in the third. It is a form of electromagnetic radiation. ये भी सही है. Heat cannot pass through vacuum. Heat can pass through vacuum in the form of electromagnetic wave. All are correct. 1, 2, 3 and 4. Based on this logic, then you have to choose. आएंगे ऐसे क्वेश्चन. ठीक है? So answer will be 1, 2, 3 and 4. I think there's a one misprint in here. It's missing here. Okay, we are missing here. So it is choice C. 1, 2, 3 and 4. Got this? Chale, next time. Which of the following will take place when the temperature of 1 kg of water is raised from 30 to 140? 30 से 140 जा रहे हैं. That means there will be a physical change of state. होगा. Water will be turned to steam. Will there be a chemical change? No. गलत. The change of state requires latent heat. सही है because water will be going into steam. True. The boiling point of water will depend upon the atmospheric pressure. That is also true. So these 3 statements are correct. 1 statement is wrong. Based on that, then we can choose the option. I will again guide. First choose the statement, decide if it is okay or not, and then try to answer those questions. Okay? Chalo. Let's proceed to the next question. Consider the following 3 statements. Heating 1 kg of water from 10 to 50.
melting 600 gram of ice at 0 degree Celsius, converting 300 gram of ice at 0 degree Celsius to water at 50 degree Celsius. वो कह रहा है किसमें ज़्यादा हीट लगेगी, ये वो कह रहा है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है किसमें ज़्यादा हीट लगेगी. देखो बात हम सिंपल रखेंगे यहाँ पे. दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. ठीक है, 25 नंबर भी याद रहेगा हमको. अच्छा, हीटिंग 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस, कितनी हीट लगेगी? Q यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं. Q ms डेल्टा थीटा, दिस इज 1000 मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 1 एंड टेम्परेचर इज गोइंग फ्रॉम 10 टू 50. डिफरेंस कितना हो जाएगा? 40. आंसर कितना आ गया? 40,000. दैट इज 40 किलो कैलोरीज. ms डेल्टा थीटा. मेल्टिंग 600 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे जो हीट का फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा ml. Now ml mass is 600 grams and latent heat of capacity is 80 calories per gram. This is 8 6 is 48. So this is coming out to be 48 kilocalories. है ना? तो ये तो उससे ज्यादा ही है, यानी कि ये तो पिक्चर से आउट ही हो गया. अभी 48 वाला जीत रहा है. आओ तीसरा केस पढ़ते हैं. Converting 300 gram of ice at 0 to water at 50 degree Celsius. इसमें दो प्रोसेस हो रहे हैं, यहाँ पे कर देता हूँ. 300 gram of ice is converted to water. So first heat आएगी 300 into 80. That will be 8 3s are 24. That will be 24 kilocalories. This is one heat. Then he is heating that water to 50 degrees Celsius. So some other process is taking place, that is ms delta theta. Mass कितना हो गया? 300. Specific heat is 1 and this is 50 minus 0, that is 50. 5 3s are 15, that is 15 kilocalories. Answer is 549. 2 plus 1 3. Answer is 39 kilocalories. कौन सी है सबसे ज्यादा? 48 kilocalories. That is the answer. कौन सी है सबसे ज्यादा? 48 किलो कैलोरीज एंड दैट इज 2. मैक्सिमम हीट यहाँ पे है. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बन गया. ये मैक्सिमम है, उसके बाद ये है और उसके बाद वो है. डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे कम कौन सा है? 39, 40, 48. This is one of the most beautiful question that explains that what is happening when the water or ice melts or change the state, what is the amount of heat needed. So cadets, I am being told that time's up for today. I am just stopping at question number 25. It's almost over. I think few questions are left for this topic. So we'll be meeting very soon. In fact, tomorrow we will be meeting. So till then, have a good life. Work hard and ये बहुत पास आ गया. मेहनत करिए, आगे बढ़िए.